Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we will read dua when sneezing. When somebody sneezes, then it is a hadith of Bukhari. It is Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. We should read Alhamdulillah, Alhamdulillah when sneezing time. After sneezing, Alhamdulillah. And after that, when you hear somebody sneezing, like somebody sneezed and the person will say Alhamdulillah, and if you hear then his or her Alhamdulillah, and then you will say Yarhamukallah, Yarhamukallah, Yarhamukallah. Again, when somebody sneezed, then he or she will say Alhamdulillah, and the listener will say Yarhamukallah, 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 and then again reply by the person who sneezed. This means who read Alhamdulillah, who sneezed, then the person who sneezed will read again Yahdikumullahu, Yahdikumullahu. Again Yahdikumullahu. Yahdi, here is Yamata, standing zabar, and the name of Allah subhanahu wa ta'ala is heavy. Yahdikumullahu, 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 wa yuslihu balakum, wa yuslihu balakum, wa yuslihu balakum. And this is the hadith of Bukhari. And then I will explain, one time read again and then I will explain the translation. The person who sneezed will say Alhamdulillah, listener will say Yarhamukallah, and then the person who sneezed will say Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. What is the translation? Alhamdulillah mean all praises are for Allah subhanahu wa ta'ala. All praises are for Allah subhanahu wa ta'ala. Yarhamukallah, listener will say, and the meaning of this, may Allah have mercy upon you. May Allah have mercy upon you. And then sneezed, the reply of sneezed, the person who sneezed, Yahdikumullahu, may Allah guide you, wa yuslihu balakum, and may Allah reform your deeds. May Allah guide you. This is dua. May Allah guide you and may Allah subhanahu wa ta'ala reform your deeds. उर्दू में जो बंदा छींक मारता है उसको ये पढ़ना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बंदा सुनता है उसके आसपास उसकी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सुनता है उसको पढ़ना चाहिए यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह, ये उसको पढ़ना चाहिए। और जो जिसने छींक मारी थी उसने फिर तो जवाब देना है यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। तर्जुमा ये है कि जो बंदा छींक मारता है वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये बेहतर होता है, ये इंसान की तबीयत के लिए बेहतर होता है, इसलिए उसको ये पढ़ना चाहिए कि सारी तारीफ़ें अल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि ये जब छींक आती है तो बहुत सारा जो मसला होता है बॉडी का वो हल हो जाता है। डॉक्टर इसके बारे में कहते हैं कि दिमाग के अंदर बहुत सारी हवा जमा हो जाती है, जब बंदा छींक मारता है तो वो हवा जो है वो खारिज हो जाती है और सुकून मिल जाता है। इसलिए सारी तारीफें अल्लाह के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और जो बंदा सुनता है यानी आसपास होता है वो पढ़ेगा
यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहमत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहमत फरमाए, करम फरमाए, रहम फरमाए। और जो बंदा जिसने छींक मारी थी वो बंदा फिर दुआ करता है, यहदीकुमुल्लाहु, अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह आपको सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाए, सीधे रास्ते पे चलाए, अल्लाह आपको गाइड करे और अल्लाह आपके मामलात जो है वो उसमें इस्लाह फरमा दे, आपके मामलात को दुरुस्त फरमा दे। ये एक दूसरे के लिए दुआएं हैं। जो सुनने वाला है वो भी दुआ करता है, जो छींक मारने वाला वो भी दुआ कर रहा होता है। और आपने सुना होगा कि यहाँ भी लोग जो यानी मुसलमान नहीं हैं तो वो भी अगर किसी को छींक आती है तो वो फौरन कहते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो वो भी यानी कि एक दूसरे के लिए दुआ ही कर रहे होते हैं। तो ये हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको याद करने की तौफीक इनायत फरमाए और फिर इसी तरह इसको पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।